गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अभी आपको पता है शिवसेना में एक स्प्लिट हो गया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है, क्योंकि वो अपने पार्टी का सिंबल क्लेम करना चाहते हैं जो कि बो और एरो का सिंबल है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी का जो फैक्शन है वो ये कह रहा है कि एक्चुअल शिवसेना वो हैं, तो उनको ऑफ कोर्स वो सिंबल मिलना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है पार्टी सिंबल की, क्यों जो है इतना जो है लड़ाई होती है पार्टी सिंबल के लिए? क्योंकि जो आप समझ लो जो लिटरेट नहीं है जो वोटर, उनके लिए तो एक पार्टी की जो इमेज है या आइडेंटिटी है वो उस सिंबल से ही होती है। उनको नहीं पढ़ना आता होता कि क्या किसको वोट करना है, बस वो उस सिंबल को देखकर वोट करते हैं। तो इसीलिए सिंबल की जो है एक तरह से कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अब एक्चुअली में क्या कैसे डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऐसे मामलों में कि किसको सिंबल जो है वो अलॉट किया जाना चाहिए? तो एक्चुअली हमारा सिंबल्स ऑर्डर 1968 जो है उसका पैरा 15 ये डिसाइड करता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स हैं कि वो सबके जितने भी अवेलेबल फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस हैं उन सबको अकाउंट में ले, और उसके बाद डिसाइड करे कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एक्चुअल में उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है। और उस ऑर्डर को जो जो इलेक्शन कमीशन ऑर्डर पास करेंगे सिंबल्स ऑर्डर 1968 के अंदर, वो ऑर्डर बाइंडिंग होगा उन राइवल सेक्शंस या फिर ग्रुप्स के ऊपर। तो अब जो है रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अब 1997 के बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो है कहा कि हम न्यू पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज या फिर चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल पार्टीज़ हों। हम सिर्फ एमएलए और एमपी को देख के ही जो है वो जो है किसी भी पार्टी का रिकॉग्निशन नहीं देंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, जो स्प्लिंटर ग्रुप होता है वो अपने आप को एक सेपरेट पार्टी रजिस्टर करो, और अपना नेशनल या स्टेट पार्टी स्टेटस जो है कैसे आप क्लेम कर सकते हो, आप जो अपनी परफॉर्मेंस करोगे स्टेट या फिर सेंट्रल इलेक्शंस में। तो उन्होंने जो है ये न्यू रूल बनाया है। तो अब जो है और भी बहुत से जो है रूल जो है डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टी सिंबल को लेके। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ जो है एमपी और जो है एमएलए के ही नहीं, आपके पार्टी में सपोर्ट भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा ज़रूर, क्योंकि आपने पार्टी के ही नाम पर इलेक्शन लड़ा है, और आपको जो है जब आप उसमें जो इलेक्ट होके आए हो तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इलेक्ट होके आए हो तो आप ही उस पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को ये समझ नहीं आता है कि कौन से राइवल ग्रुप्स के बीच का सपोर्ट जो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा है, उस केस में जो है इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि जितने ज़्यादा एमपीज़ या एमएलएज़ किसी एक मेजर ग्रुप के पास होंगे उसके बेसिस पर जो है इलेक्शन कमीशन डिसीजन ले लेता है। ठीक है। अब क्या जो सिंबल्स हैं वो किस डिफरेंट पार्टीज़ के सेम हो सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। लेकिन जो है आपको नेशनल और जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं जनरली उनके सिंबल्स जो हैं वो सेम नहीं होते हैं। जैसे ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस को सेम सिंबल मिल गया कभी, क्योंकि वो तो नेशनल लेवल पर लड़ रहे हैं। फिर जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं उनको ऐसा हो सकता है कि उनको सेम सिंबल मिले, लेकिन वो अलग अलग स्टेट में, जैसे कि बिहार के इलेक्शन का आप एग्जाम्पल लो, तो समाजवादी पार्टी, पैंथर्स पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना चारों ने डिसाइड किया वो बिहार असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ईसी ने उनको कहा कि आप अपने जो है डिफरेंट सिंबल से लड़ सकते हो, क्योंकि क्या हुआ था, समाजवादी पार्टी और पैंथर्स पार्टी का दोनों का सिंबल जो है वो साइकिल था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना का भी जो है वो जो है बो एंड एरो था। तो इसलिए उनको कहा गया कि आप अपने दूसरे किसी सिंबल से आप इलेक्शन लड़ोगे। अपनी स्टेट में आप अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ सकते हो, बट आप दूसरी स्टेट में लड़ रहे हो जहाँ पर सामने एक और पार्टी ऐसी जिसका आपके जैसा सिंबल है, तो आप आपको डिफरेंट जो है सिंबल पर लड़ना पड़ेगा। तो पार्टीज़ जिनके सेम सिंबल हैं, फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर और डीएम के जो तमिलनाडु की, उनका सेम सिंबल है राइजिंग सन, बट क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट्स में लड़ रहे हैं। ऐसे ही बीएसपी और असम गण परिषद का भी है, समाजवादी पार्टी और पैंथर्स पार्टी का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना का है। तो क्योंकि ये अलग अलग स्टेट में लड़ती है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब ये एक ही स्टेट में दोनों पार्टीज लड़ेंगी तो इनको अलग सिंबल पर लड़ना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वावैक। सर्वावैक एक वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप कर रहा है, और ये आपके सर्विकल कैंसर के लिए जो है बनाई गई है। ठीक है। तो जनरली जो है ये आपका जो सर्विकल कैंसर है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। जनरली मोस्ट कॉमनली ये विमेन को अफेक्ट करती है,
और जो है होता क्या है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो ह्यूमन आई एम सॉरी, सर्विकल कैंसर तो ऑफ कोर्स विमेन को ही सिर्फ अफेक्ट करता है, लेकिन जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी जो है, ये विमेन को भी अफेक्ट करता है। मोस्ट जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट ऑफ कोर्स विमेन को ही करता है, बट इवन मेल को भी अफेक्ट करता है वायरस, ठीक है। तो अब इसी के खिलाफ ये सर्वावैक वैक्सीन बनाई गई है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, ठीक है। अब क्वाड्रीवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये 4 डिफरेंट एंटीजेंस के खिलाफ लड़ सकती है, वायरस के खिलाफ भी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ भी। अब सर्विकल कैंसर जो है, ये जो है एचपीवी से सबसे ज़्यादा होता है, और भी बहुत से इसके कॉज हैं, बट सबसे ज़्यादा एचपीवी की वजह से होता है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप है ये हमारे इंडिया में, और लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन विमेन है, ठीक है। अब इंडिया में 1/5 ऑफ ग्लोबल केसेस आते हैं सर्विकल कैंसर के, और जो विमेन 30 से 49 एज के बीच में होती हैं, उनको ये टाइम टू टाइम अपने जो है स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। अब एग्जिस्टिंग वैक्सीन ऑफ कोर्स बहुत महंगी हैं इंडिया में। जो मर्क की वैक्सीन है गैडासिल, और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की जो वैक्सीन है सर्वैरिक्स, ये लगभग 2800 या 3300 रुपये पर डोज के हिसाब से हैं, और 2 डोज लगती है तो बहुत महंगी पड़ती है। तो इसीलिए इंडिया ने अब ये सर्वेवैक जो है, SII जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है, उन्होंने ही ये वैक्सीन बनाई है। होम ग्रोन इंडियन वैक्सीन है ये। और वैसे तो इंडिया में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2008 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी तक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत महंगी हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है 2800 रुपये की सिर्फ एक डोज है। अब ICMR के हिसाब से जो है ये वैक्सीन जो है एडोलेसेंट गर्ल्स को 2 डोजेज़ में लगेंगी। अब सर्वेवैक जो है, ये वायरस लाइक पार्टिकल से बनाई गई है, जैसे कि आपके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, और ये एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करके जो है प्रोटेक्शन देती है। अब ये एक बहुत ही अच्छा रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इसने वैक्सीन ने ट्रायल्स में दिखाया है, और ये इवन प्लान किया जा रहा है कि जो बहुत छोटी जो है गर्ल्स हैं, एज यंग एज 9 ईयर्स ऑफ एज, इनके टाइम से ही स्टार्ट कर दी जाएगी ये वैक्सीन। और इंडिया प्लान कर रहा है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि इसको 50 मिलियन गर्ल्स को इससे हम वैक्सीनेट करेंगे बिटवीन द एजेस ऑफ 9 to 14 ईयर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो एक इंडिया बाउंड रशियन कार्गो ट्रेन से जो भेजा गया है, वो ईरान पहुंच चुका है। 3800 किलोमीटर का उसने सफ़र तय कर लिया है। अब ईरान से ये कार्गो इंडिया में शिप किया जाएगा बाय सी, ठीक है। तो अब ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ये पार्ट है। तो 7200 किलोमीटर का मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसमें फ्रेट मूव होगा इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच में। ये प्रोजेक्ट तो सितंबर 2000 में जो है इसके फाउंडेशन रखा गया था, जब रशिया, ईरान, इंडिया ने सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में मिलकर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट को 13 कंट्रीज़ ने टोटल अभी तक रेटिफाई किया, जिनके बीच में से ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर गुजरेगा। अज़रबैजान, ये 13 कंट्रीज़ हैं, बेलारस, बल्गेरिया, आर्मेनिया, इंडिया एक्सेट्रा। तो ये कंट्रीज़ में जो है, इनमें से ये कॉरिडोर गुजरने वाला है। अब इंडिया जो है, उसने इसी प्रोजेक्ट के लिए जो है चाबहार पोर्ट भी जो है वो बिल्ड किया था, और अज़रबैजान जो है उसने ऑन बिहाफ ऑफ जो है ईरानियन साइड सेक्शन ऑफ द चाबहार कॉरिडोर को डेवलप किया है, ठीक है। अब बहुत सी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो इसके अंदर आ गई हैं, ताकि INSTC को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जा सके। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो हमारा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये रिस्पॉन्स है। और अब होगा क्या कि पहले जो रशिया से इंडिया में गुड्स आने के लिए 40 दिन लगते थे, वो 25 दिन में पहुंच सकेंगे, और हमारी जो कॉस्ट भी जो है इस ट्रेड की, वो 30% से कम हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशंस। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशंस जो है अपने सारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है एस्टैब्लिश कर दिए हैं, जो कि कलेक्टर्स द्वारा जो है हेड किए जाएंगे, और जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसमें क्लाइमेट ऑफिसर्स की तरह काम करेंगे। अब ये कैसे काम करेंगे? जो कलेक्टर्स हैं आपके, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन प्लान्स बनाएंगे, कैपेसिटी बिल्ड करने का काम करेंगे, इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, और इवन जो है सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो होगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एलिमिनेट करने का काम, ठीक है। फिर जो है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि तो गवर्नमेंट का जो क्लाइमेट रिस्पॉन्स है, ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट हो पाएगा ऑल सेक्टर्स ऑफ गवर्नेंस में, और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ जो है वो लोकल लेवल तक जो है वो पहुंच पाएंगी। सोलर, विंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और व्हीकल्स जैसी जो है टेक्नोलॉजीज़ को ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाने का काम किया जा सकेगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव। तो इंडिया का जो CBI है, उन्होंने इंटरपोल के इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन
एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। अब इसमें होगा क्या कि हमारे इंडियन सीबीआई जो है उसको उनके इन्वेस्टिगेटर्स को एक्सेस मिलेगा कि वो चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ ऑनलाइन को डिटेक्ट कर सकें और जो अब्यूज़र जो इंटरनेशनली बैठे हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, विक्टिम्स को क्राइम्स और जैसे विक्टिम्स को भी जो है इंसाफ दिला सकें। तो आईसीएससी एक पूरा डेटाबेस है जिसमें वीडियो और इमेज कंपैरिजन किया जाता है, और ताकि चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल को जो है एनालाइज किया जा सके और कनेक्शन बनाया जा सके कि कौन विक्टिम है, कौन अब्यूज़र है और कौन सी प्लेस से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एज़ पर जो जुलाई 2022 तक के आंकड़े के हिसाब से 30,000 विक्टिम्स जो है चाइल्ड अब्यूज़ के और 13,000 क्रिमिनल्स को पकड़ा जा चुका है, और इंडिया 68th कंट्री बना है जिसको ये अब एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब इंटरपोल के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, 184 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी। 1923 में इसको बनाया गया था। याद रखो, यूनाइटेड नेशंस का ये जो है कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है ये। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है, लियोन में। अब ये इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इसको बनाया गया था, इवन उन कंट्रीज़ के बीच में भी जहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी तक प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप समझ लो पाकिस्तान और इसराइल, तो पाकिस्तान और इसराइल में आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में कोऑपरेट करने के लिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जो अगर उनकी कोऑपरेट करेंगी तो वो इंटरपोल के थ्रू कोऑपरेट कर सकती हैं। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के स्पिरिट को जो है एनफोर्स करने के लिए इंटरपोल काम करती है, और कभी भी ये किसी पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब हर कंट्री जो मेंबर कंट्री है इंटरपोल की, उसको इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाना पड़ता है, जो कि इंटरपोल के हेडक्वार्टर के साथ 24/7 जो है वो कोऑपरेट करता रहता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is symbols of political parties. You know that Shiv Sena has been split into two factions. So the Eknath Shinde, the CM-led rebellion has costed dearly to Uddhav Thackeray-led Shiv Sena, and now Uddhav Thackeray-led Shiv Sena has approached the Election Commission of India to stake a claim over the symbol of the political party, that is the bow and arrow symbol. But the Eknath Shinde-led section is saying that they are the original Shiv Sena, so they must be accorded this symbol. So why there is a fight over this symbol? Because symbol is very, very relevant to the political survival of any political party. You know that many Indian voters, they cannot read because they're not literate. So that's why they have their association with the party symbol only. Whenever they are going to vote, they are not reading which party they are voting for, but they have an impression of the symbol based upon which they cast their vote. That's why political party fight for the original symbol. So what are the powers of Election Commission in granting party symbols? So as per the Symbols Order of 1968, para 15, the Election Commission has the power to take all the all the available facts and circumstances into account while deciding upon what symbol has to, or which faction of a political party has to be recognized with the original symbol. So the decision that this Election Commission would take under the Symbol Order 1968 shall be binding on all rival sections and groups. So it only applies to the recognized national and state parties. For the in cases of unrecognized party, EC usually advises the factions to resolve their disputes internally, or they can approach the court. So after 1997, the EC decided that they will not recognize these new parties, because it is not just that if you have MPs or MLAs, you are the original party. You may have fought because you have fought the elections on the political party. You were just the contenders, or you were just the candidates. It does not mean that you are the soul of the party. So that's why EC decided that they will not recognize a political party merely on the basis of numbers of MPs and MLAs. And a new rule was formed by EC that if there is a splinter group of a political party, then that group would be asked to form a separate party, and only after that they would be given a national or state party status. But there is a certain case. In case the EC is unable to find the strength of rival groups within their party organization, then it can resort to a decision based upon the majority of elected MPs and MLAs. Okay, so like in this case, if EC fails to see which faction, Uddhav Thackeray's faction or Eknath Shinde faction, is enjoying support in the
party structure, in that case election commission would resort to testing the majority of MPs and MLAs which are supporting which section of or faction of the party. Okay, so can there be same symbols for different parties? Of course there can be same symbols, but of course it cannot be there in national and state parties, national parties. So you can see that there can be no incident when BJP or Congress, that is the national parties, they cannot have the same symbols. But state parties can have same symbols only outside their state. So like in 2015 Bihar Assembly election, Samajwadi Party and Panthers Party both are having cycle as their party symbol, because both of them were fighting Bihar Assembly election. So EC asked them to use separate symbols because they were having originally same symbol, that is the cycle. For Jharkhand Mukti Morcha and Shiv Sena, both of them also decided to field their candidates in Bihar Assembly election, and both of them have bow and arrow as their symbols in their respective states. So that's why EC also asked these two parties also that they should fight on separate symbols. So if you are having, let's say, this Federal Party of Manipur or DMK, both are having rising sun as their symbol, as long as they are fighting in only their state and they are not competing with each other in any state, they can have this rising sun as their symbol. But in case if they let's suppose Federal Party of Manipur and DMK starts fighting election in Maharashtra, then they would have to adopt the separate symbols. Okay. So the next topic is Cervavac. Cervavac is a vaccine which has been developed by the Serum Institute of India, and it has recently received the market authorization from the DGCI, and it will be the first quadrivalent human papillomavirus vaccine which will prevent women from cervical cancer. Okay, so it has stimulated, because why is it called quadrivalent human HPV vaccine? Because it has stimulated an immune response against 4 different antigens, not just the virus but other microorganisms also. So what is this cervical cancer? So cervical cancer is a very common sexually transmitted long-lasting infection. It is caused by several other things, but HPV is the main cause of this cancer. So that's why a vaccine has been developed for it. And it is, cervical cancer is the second most common cancer type, and it is the second leading cause of cancer deaths in women. And India accounts for 1/5 of the global burden. So all women between the age of 30 and 14, they must get screened for cervical cancer, and they must also get their adolescent daughters screened for that also. So it is not that we do not have any existing vaccine for this HPV. We have this Merck vaccine and GSK vaccine, but they're very costly. So HPV vaccination program started in 2008, but it is yet to be included in the national immunization program because the vaccines which are currently available are very expensive, and they are a foreign region vaccine. So ICMR in 2016 said that adolescent girls must be vaccinated with 2 doses of these HPV vaccines in order to protect themselves against cervical cancer. So why this Cervavac is very important? Because it's a homegrown vaccine. So, and it will be cost effective. Like your Covishield was very affordable. So this new HPV vaccine will also be very affordable because it's a homegrown vaccine, and it has also shown tremendous response during the trials. 100% of the vaccine recipients showed excellent response, and their safety records were also excellent. So the government is planning that this vaccination will start at the young age of 9, and the government is planning to vaccinate almost 50 million girls between the age of 9 to 14 years in India. So the next topic is International North-South Transport Corridor. So an India-bound Russian cargo, which was sent by train, has reached Iran. It is a part of the INSTC, that is the International North-South Transport Corridor project. And after reaching Iran, this will now be shipped to India through sea. So what is this International North-South Transport Corridor? It's a 7,200 kilometer multi-mode transport project which involves moving freight from India to Iran, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Russia, Central Asia and Europe. So it was, of course, first time the foundation of this INSTC was laid in September 2000, and it was laid through the intergovernmental agreement which was signed between Russia, Iran and India in the St. Petersburg, that is in Russia.
So since then it has been ratified by 13 countries in total, and these countries are mentioned here: Azerbaijan, Belarus, etc. And funding for this project has been mostly by India. India has backed this Chabahar project, and it has completed its entire construction, and the Iran section of the corridor has been taken care of by the Azerbaijan government on behalf of Iran, of course, and even the multilateral organizations have stepped in to support this INSTC in different ways. So, what are the benefits of INSTC? Of course, it's a response to China's Belt and Road Initiative, and the goods which are being sent from Russia to India will take less than 25 days to reach. Currently, it takes about 40 days for the arrival of goods between India and Russia. It will provide India an access to Europe, and it will through a land route, of course, and it will also reduce the cost of trade between India and Russia by about 30%. So the next topic is district climate change missions. So Tamil Nadu government has established this district climate change missions in nearly all 38 districts. So it will be headed by the collectors, who will be the mission directors, and it will be also involve district forest officers, who will function as the climate officers. So they will prepare a district level climate change mitigation and adaptation plan. Of course, these collectors will prepare this plan. They will build the capacity and provide inputs for the low carbon climate resilient development plans. And initially they will first function against the use of single use plastics, and they will also help strengthen the government's climate response at the grassroots level. They will also promote eco-friendly technologies to the grassroots level. Solar and wind energy technologies, biodegradable packaging, and e-vehicles will be promoted at the local level. So this mission is poised to create strong policy support across all sectors of governance, and it will reduce greenhouse gas emissions also. So the next topic is International Child Sexual Exploitation Initiative. So India's Central Bureau of Investigation has joined the Interpol's International Child Sexual Exploitation Initiative. It will allow India to collaborate with investigators in other countries for detecting child sex abuse online and identifying the abusers, victims, and crime scenes using the video and image comparison. Okay, so this ICSC database uses this video and image comparison to analyze child sex exploitation material and make connections between the victims, abusers, and places. So as of July 2022, this ICSC has been able to track down upon 13,000 criminals and provided justice to 30,000 victims of child abuse. So India will be the 68th country to have access to this database. So what is this Interpol? Of course, it's the world's largest international police organization with 184 member countries, and it was established in 1923. Just remember that it is not a specialized agency of the United Nations. It was formed even when the United Nations was not formed. So its headquarters is located in Lyon, that is in France, and it also facilitates international police cooperation even between those countries who do not have diplomatic relations. Like I was give you an example of Pakistan and Israel. They do not have diplomatic relations, but in case they have to cooperate at the police level, they will cooperate through Interpol. So Interpol works in the spirit of Universal Declaration of Human Rights, and its constitution strictly prohibits any intervention or activities which are of any political, military, religious, or racial character. So every member country of the Interpol has this National Central Bureau, which coordinates and connects itself to the General Secretariat of the Interpol through a 24/7 network. Okay, so these were our topics for today. आज आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से वीकली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन भी डाउनलोड कर लेना. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.